I think this will be the first video of motorcycle mod review for 2025 मार्च में I just don't give a fuck. कुछ नया होने वाला है. We are going a bit beyond 5 spark plugs. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. कुछ मॉड्स होते हैं जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के होते हैं एंड आई थिंक दे गो बियॉन्ड 5 स्पार्क. Something I feel that is like extraordinary. We are going to give it the Golden Sprocket Award. Tanya everyone, Tanya, chat तालियों से भर दो. Maybe this video someone might not even get it or maybe 10 people will get it. देखते क्या होता है. So बने रहिए वीडियो में. Okay, पहला वीडियो है from Aditya Niruddh 7. Tell me what's the different chat. What you're noticing here? First of all, it's a RC200 console, second gen. Yes, नवीन ने सही पकड़ा यहाँ पे. सही पकड़े हैं. This is a second gen RC जिसपे Gen 1 का हेडलैम्प लगा हुआ है. I have no idea how he did it. पुलिस पता लगा रही है. फेयरिंग तो सेकंड जेन की ही लग रही है. इससे सहन नहीं हुआ. लोग आके इसको परेशान करते होंगे जैसे मेरे को आप लोग परेशान करते थे. पापा सेकंड जेन आरसी तो बेकार है, क्या गंदा हेडलैम्प है. इसको भी ऐसे परेशान करते होंगे लोग. आई स्टिल लाइक द सेकंड जेन आरसी. आई पर्सनली लाइक इट, स्पेशली द आरसी कप सीरीज वन, बिकॉज आई आइडेंटिफाई एज ऑरेंज. So yeah, one thing that I missed जो चैट ने मेरे को दिखाया, that is the review mirrors. I will recommend to keep them on. उसके लिए -1 spark plug तो पड़ेगा. And I see you are riding it. It's not like you have parked it somewhere at home. Bharat mirrors you can put. They look cool. Even the Rizoma mirrors they look cool on these kind of motorcycles. So why not? 4 spark plug. Worthy man. 5 नहीं दे सकते थे because no rear mirrors and you're riding it around. So put back your rear mirror and you might get 5 spark plug, right? हाँ, ये क्या है? Cop searching for the keys. Okay. ये कॉप की शक्ल नहीं दिखाया. Good, that's good. कोई कॉल भी कर रहा है इनको. कॉल पे भी है. Wow. What is happening? Oh, there's no key. Oh, you don't have to put key. Some mod. USB mod. What? You put a USB, tuck it inside, and then run the motorcycle. Oh shit. I'm not really sure, but I don't think so cops are allowed to take keys from your motorcycle. But then हम लोग भी थोड़े स्क्विड की जैसी हरकतें करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो उसी के चक्कर में ये पुलिस लोग भी they have started removing keys, which I don't like personally. But then अगर पुलिस वाला हम लोग को रोक रहा है, हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास और क्या ऑप्शन है, right? I'll say stop man, whatever it is, figure it out like adults. Do not try to run off and all. You might run off now. आगे जाके क्या होगा पता नहीं. क्या पता आगे भी जाके नाकाबंदी लगी हो, आप जाओ वहां पे, आपको पकड़ ले, फिर आपको ठोकना शुरू कर दे वहां पे. या तो इस बार बच गए, क्या पता आपका नंबर नोट कर लिया हो तो बाद में आपकी मारे. आई नो पुलिस हमारी जैसी भी है, बट आई थिंक एडल्ट वे इज टू स्टॉप एंड वर्क इट आउट. एट दैट टाइम आई विल से मेक अ वीडियो. कीप योर GoPro on. Carry all your document. If you don't have your document, you have to pay a fine. I don't know what to say about this mod. So I think he has done this mod because he doesn't want to stop for cops. I don't think so he has correct papers or maybe he doesn't have license. So जो भी है कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे के साथ. I don't think so we are gonna give him for this mod any kind of appreciation. So I think that is a proper 1 spark plug. चैट पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा. 0. बहुत लोगों को ये रिव्यू वाला सिस्टम समझ में नहीं आता. अगर आप रेस्टोरेंट गए, वहां पे खाना खाया, आपको रेस्टोरेंट खाना पसंद नहीं आया तो पसंद आया तो आप गूगल रिव्यू करते हो, तो आप 0 स्टार तो देते नहीं हो ना. 1 स्टार का मतलब क्या होता है? 1 स्टार का मतलब होता है वेरी बैड. देयर इज नो 0. सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट. अभी भी बहुतों को समझ में नहीं आता. पता नहीं कितना ही डिफिकल्ट है. मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? ओके, चेक दिस आउट. Wow, that's a Duke mod, the Dragon Ball Z mod. Whoa, Spring को भी कलर किया है. Oh, this is Dragon Ball Z and yeah, Vegeta versus Luffy. ये Cell का कलर स्कीम यूज किया है for this mod. Villain character है from Dragon Ball Z, but it came out really well, man. I like this. I like this style. I call my Duke 790 Charizard, so I have a vision to have something on that color scheme on my Duke 790 when I do a rap. So I know where he is coming from. Anime lovers are gonna love this mod. Indeed, anime lovers are gonna love this mod. I would have given it personally a 5 spark plug. 4 spark plug. This one is from JOD or what is a Big Beast 3.0. Okay, that's cool. Clean mod, very clean. Tail tidy. There's no tail actually, but very nice. No rear view mirror, very sad. It goes with his helmet with that neon on the wheel and the neon accent on the tank. Wheel cover. How dare you share me this video? You just wasted your super chat. अरे मैं सीरियस हो जाऊंगा, डांट दूंगा बहुत कस के. This guy super chatted me to check out his mod and he knows I hate wheel covers. I was about to give him a 4 spark plug. ये इसके लिए भाई 3 spark plug है. I'm so sorry. This is from Being SRV and he has converted his Splendor into a cafe racer.
इनटू अ कैफे रेसर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे बनाने में टोटल कॉस्ट कितना Wow. आया। तो ये जो स्प्लेंडर Man, this looks like a GT, but I see wheel cover. I was about to give him some golden sprocket for the work he has put in, and it looks nice and clean. कैफे रेसर स्पोक व्हील्स दिखती है, ज्यादा अच्छा लगता है, तो आई विल स्टिक विद द स्पोक व्हील्स पर्सनली। एनीवेज, मैंने खरीदा था 10,000 रुपए 10,000 रुपए में स्प्लेंडर था, ये मैंने खरीदा था 3,500 में। ओह, और जो आई थिंक दैट्स जीटी टैंक। इसके ड्यूअल मीटर थे ये खरीदा था मैंने 1300 में। और जिसके हैंडल बार्स थे वो खरीदा था मैंने 1100 में। जो ये हेडलाइट है ये खरीदा था मैंने 2000 में। बट इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये मैंने अलग खरीदा था। द ब्रैट सीट बोलते हैं इसको। और ये दोनों छोटे छोटे मिरर जो थे वो मुझे 400 में मिले थे। 400, जो okay. एयर फिल्टर है ये मुझे 400 का पड़ा था। और Nice. जो ये एग्जॉस्ट है तो ये मेरे को पड़ा था 2000 रुपीज। With budget build, he has done such a good job. ये 1600 पड़ा था दोनों तरफ। Do not tell me what the wheel wheels covers. cover है उसका कॉस्ट पड़ा था मुझे 200 रुपए। 400। ये जो पता था मेरे को, एक व्हील कवर 200 का है। इंडिकेटर्स है ये मुझे पड़े थे 400 400, हाँ, ये तो देखा फ्लैशर मैंने। के साथ 600 के। और Okay. बाकी ये सारे स्टिकरिंग कराने के मुझे पड़े थे 250 रुपीज। 18 इसे Full मैंने budget bill, खरीदा था crazy. 2200 में। तो ये जो बैकलाइट था इसे मैंने खरीदा था 200 रुपीज में। Nice. आप लोग मुझे टोटल करके बताओ कि इसे बनाने में मुझे कितना कॉस्ट आया। मैंने कैलकुलेटर ऑन करके नहीं रखा था, नहीं तो बताया जाता मैं। या तो मैं वो वाला लड़का नहीं हूँ जो ऐसे से करता है, आपने देखा वाला, वो ऐसे से करता है फिर कैलकुलेट करके बताया जाता है। He made the seat call from a helmet visor. Oh, are you serious? What? Day 17 of Oh, that's crazy. making my split। Crazy budget build, man. It looks so nice. मैंने budget build देखा है दूसरों का भी। Amazon पे जाते हैं, जो अंडर पंडर संडर चीजें दिखती हैं उसको सस्ते में खरीदते हैं एकदम, चाहे वो उनके विजन के हिसाब से हो या ना हो, बस लेके चिपका आते हैं। There is no passion, there is no vision. 29,650। ओके, हमारे बंदे ने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे। नाउ वी नो। थैंक यू सो मच आयुष फॉर द कैलकुलेशन। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोस किड। I was actually gonna give golden sprocket, but wheel cover की वजह से मेरे हाथ जो है बंधे हुए हैं। Fat tire use is a budget mod, so budget mod में fat tire I think will be difficult. This is something people should aspire from who doesn't have a lot of budget, but they are into modding. He is the prime example. He is the Optimus Prime. Learn from this guy, man. He killed it. पापा के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन जनता ने ही बोल दिया कि इसको मिलना चाहिए विद 41% गोल्डन स्प्रॉकेट। एडिटर साहब तालियां लगाओ, यहाँ पे तालियों की आवाज लगाओ। पहला गोल्डन स्प्रॉकेट फ्रॉम पापा's चैनल, पहला goes to Being SRV. Congratulations for getting the 69 teeth गोल्डन स्प्रॉकेट अवार्ड। ये देखिए रोहित 315 है ये। He has made a Splendor, Lord Splendor into a car, a two-wheeler car. Lord Splendor here identifies as a car. I just wonder how is he riding that with a steering wheel. क्या करना पड़ेगा इसके लिए to get a license for this? Even is changing the gear with a gear lever. Mod वर्ड सब ठीक है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? Oh, he's singing the song. मेरे यहाँ पे muted है. That's why I'm feeling weird. Sorry, my bad. Papa is old. Please try to understand. Papa is doing better or he's doing better? कर कुछ चल बेटे अभी बच्चा ही है इधर बाप। बस बना ले भाई। How is he changing the gear? I'm confused with that. You guys are raising good question. ये front brake कैसे लगा रहा है? और where is the clutch lever? How is he accelerating? क्यों हिला डाला ना। आप लोग हल्के में ले रहे हो, ये सब हल्के में मत लो। बहुत इंजीनियरिंग लगाई, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ब्रेक कैसे लगा रहा बंदा? पे CID को लगा, दरवाजा तोड़ो इसका। चोरी मत कर लो। ये बंदे को इंजीनियरिंग स्कूल जाना चाहिए इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए। ये दो स्पार्क प्लग was from the जनता to the जनता। I would have given 5 spark plug men. Yeah, 1 spark plug for all that dance and all. उसको छोड़ के the engineering that he's put on his Sapalanda is next level. It's a clean mod, full black, all those jazz, okay? लेकिन क्या इसमें है जो feels very out of place? प्रीतम ने सही पकड़ा, पंजाबी नंबर प्लेट। भाई पंजाब का मॉड है, ऐसा मॉड इतना क्लीन, इतना कम, इलीगल है ये। ओनली 1 एग्जॉस्ट, हॉर्न मॉड नहीं किया इसके ऊपर, मैं नहीं मानता। ट्रैक्टर टायर नहीं लगा इसके ऊपर, और बुलेट नहीं खरीदी, हंटर खरीदा। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। होपफुली पटाखा एग्जॉस्ट है ये, होपफुली। आई नेवर थॉट पंजाब में भी ऐसे इतने अच्छे क्लीन मॉड्स होते हैं। शाबाश बेटा। आपके घर वालों आपसे परेशान नहीं है? आई एम सो सॉरी, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट ट्रॉमा, इट्स ऑल योर मिस्टेक। हाँ, इनका नाम है बाय द वे कैफे रेसर MS। आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई एम सरप्राइज्ड टू। That is true. Only one in Amritsar. Only one in whole of Punjab, dude. Only one in Amritsar लिखा बंदे ने. With that wheel cover and being a Punjabi and doing that kind of mods, you get a 4 spark plug. Good stuff. Remove those wheel cover and you get the 5 spark plug.
If you want to remove, dude, do not listen to us. अगर आपको अच्छा लगता है रखो, आप जानते हो क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, आपके ऊपर है. This is something we follow on our channel. तो #no2 will cover. बहुत देर से अच्छे मॉड देख रहे थे, अभी ये देख लीजिए. यूनिवर्सल किंग NS200 इन कैम्बोडिया. ये इंडिया का मॉड नहीं है, बाय द वे, कैम्बोडिया का है. पल्सर NS. मे बी दिस इज कंसिडर अ ब्यूटी इन कैम्बोडिया. 2 अवार्ड भी मिला है. Oh my God, what the hell is happening? 1, 2, 3 horns. Is that exhaust? What is that? What is this? I don't know. ये कीले क्यों निकली हुई थी सारी? Nobody wants to road rage with this guy. Not even the Fortuner guys or the Creta guys. But भाई अवार्ड है इसके पास, तो हम क्या घंटा इसको अवार्ड देंगे? It's like a scrapbook. There's so much things to discover, man. Cool. I don't think so we're gonna get spark plug for this. You guys decide. Let me know in the comment section. यार ये मैंने क्यों सेव कर रखा हुआ है? ये क्यों अभी भी लोग कर रहे हैं? मियां खलीफा का रैप लगा रहे हैं. इसके ऊपर कितनी बातें कर चुका हूं मैं. हाँ, मियां 3.0 it seems. Nobody cares, dude. It's done. 2024 is over. Get over it. Whoever did this, Devil Rider, you should be Turkey Rider. क्यों चाहते हो लोग आके बुरी नजर से आपकी गाड़ी को देखे? साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन. टर्कीज की बुरी नजर. हाँ, एक मोड़ा टीका भी लगाया था उसकी शक्ल पे. पूरी मिट्टी हो गई थी, बहुत दिनों से यूज नहीं किया था. आज पड़ेगा. बंदे ने व्हील कवर नहीं लगाया. वन थिंग आई हैव टू गिव हिम. ओह, आई लव गुड लुकिंग एक्सपल्स मॉड. लॉट ऑफ पीपल डू देयर एक्सपल्स मॉड टू मेक इट वेरी मच ऑफ रोड. यू नो, बहुत लाइट वेट मॉड्स करने की कोशिश करते हैं ऑन द एक्सपल्स. But this mod now feels like he wants to make a proper dual sport kind of, and I like it. It's simple but it looks nice. Is that a voltage meter? मेरी तरफ से चुम्मी, क्या बात, thank you. हाँ, it looks like company fit, man. Oh, by the way, this is from Drag World. Even simple mods look good, and Janta accepts that, and that's why we have given 5 spark plug. Pataka exhaust. Maybe it's a cultural thing which I don't understand. Everyone is doing it, dude. What is this going on? What is this? IBW, Pataka IBW. And how do they do it? They're switching off, switching on. I don't understand this. You know how this works. What is the science behind it? मैं पूरा नट बोल्ट उसका हिल रहा है. आप देख रहे हो? इसका हेडर पाइप देखो. इसका हेडर पाइप देखो. Can you see the header pipe? It's coming off. By the time he goes back home, at least 10 bolts will be missing. And they're professionals at this. Some kind of male dance attracting girls. Like, you know how these birds they do in the jungle? His girlfriend is lucky. Oh, his girlfriend is lucky. Dum 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 dum. I don't know. Maybe these bikes were meant to do this. गजब बेइज्जती है. Piss off Anurag by sending this to him. Oh shit. Okay, fine. Why I'm reviewing this in this video? I have no freaking clue. No spark plug from Papa because और spark plug देंगे तो पता नहीं कितना और spark निकालेंगे. Many of you know this person called I Am Zach. This guy is also I Am Zach. Maybe they both decided to name themselves I Am Zach without knowing each other. So one I Am Zach which I know, he's from Assam and he has a very cool modded GT. And this guy has a version 2 R15 modded, man. And check out his mod, actually very clean. Double disc in front which doesn't make sense, but I think one is only for show. Very clean black on a V2 which is very well kept. Again, these fake reservoirs. This is WP suspension. I think the Duke suspension. Yeah, it is. And he's put calipers also from Duke only. So that's why we are seeing the forks popping out. Is it lowered? I feel it's lowered. Yeah. And it's swing arm. It doesn't feel like it's a R15 V2 swing arm. Which swing arm is that? Please correct me if I'm wrong. And he's put rear sets. These are rear sets, right? R15 didn't come with underbelly exhaust, na? Oh, winglets are also there. I missed the winglet part. It's very subtle. It looks cool. Nice cowl. For me, I feel this is a golden sprocket worthy. Whoa! क्या बात! जनता ने मिलके दिया है yet another mod to get the golden sprocket. I don't know which real I Am Zach or fake I Am Zach, but yeah, I Am Zach go. Control. Whoa, this one, dude. Whenever I see this, na, I can't रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. Control myself. This is so well done. This wrap actually matches with my helmet, my K6, AGV K6, right? Visor goes somewhat with the DRLs. I'm selling my helmet, by the way, the K6. Let you guys know more information about it on my Instagram, and maybe the Blaziken. If you want to pick it up for your Aprilia, let me know. Usually Aprilias are famous for their too much stickering going on, too much colors happening, which I love about Aprilia. But this guy went with something simple. He has blacked out the headlamp, make the dials yellowish, which is going so well with the whole look. Wow, this wrap color looks sexy. He has put extra winglets also.
looks damn cool. I want to do actually a series because I love RS457s and I'm seeing a lot of people are doing some crazy ass mods with RS457s. One day we'll do it. Let me just collect some clips and you guys also can share with me RS457 clips and all where people have modded the RS457s. Looks like Aston Martin. Oh yeah, actually. Oh, I think it's a fan of Aston Martin F1 team. Now it makes sense. Blaziken, are you? Golden Sprocket मिल सकता था. जनता ने hardcore मिलके 5 spark plug दिया है, which is also good. And personally, this is one of my favorites RS457 mods out there. Oh, this is my favorite video. This is the video I want to showcase. We are not gonna rate him anything right now, but this is my favorite video from Anurag. I can't play the music, so he's showcasing the wheel cover. There's a music going which I can't play. Then he removes everything just to take out the wheel cover. He shared me to showcase that he removed his wheel cover. We are doing it, my dudes. Anurag ने क्या लिखा वहां पे? Time for that wheel cover to go. Now that Papa Sa follows me, I don't want to lose any spark plugs. क्या बात, क्या बात, क्या बात. I have promised you guys, जिस दिन आप निकालोगे wheel cover 5 spark plug, इसमें तो पोल वोल भी नहीं करना है. और for the super meteor. Lovely one. पृथ्वीराज लिखते हैं, I don't understand the hate around wheel covers. I've seen some motorcycles that look very good with some pretty wheel covers. I'll tell you what. My opinion why I don't like it. Affects your rideability. It can be also dangerous. A lot of people told me also it has affected their ride and it could have caused an accident. Not on his motorcycle but someone else. So they were riding in a group, going in a line. A truck came by, gust of wind. The guy who had wheel covers on both the wheels, he just got pushed to the left. And there was a ditch on the left. अगर थोड़ा और push होता तो ditch में होता. That is one of the reasons that it is dangerous. Second reason why I don't like it, I personally don't like it. Simple as that. I just don't like the look of it. Most of the wheel covers that people are using are cheap quality ones. 400 rupees वाला, 600 रुपए वाला. ये थोड़ा decent भी लग रहा है. After some time it starts looking so bad. कटने लगता है. उसके जो नट बोल्ट्स होते हैं रॉट मारने लगते हैं. कितने गंदे लग रहे होते हैं. जिसको करना करे. लेकिन यहाँ पे अगर आप व्हील कवर लगा के आओगे तो फिर 5 स्पार्क प्लग तो नहीं मिलने वाला. हमारी जनता तो नहीं देगी. मैं ना दूं नहीं, हमारी जनता तो घंटा नहीं देगी. Oh, this one. Oof. This one looks so cool. People who follow Papa Sar on Instagram, they know why. This headlamp mod, same as Papa. This headlamp plate is from Viv Design. He's from Instagram. He also does a lot of other custom products for motorcycle. This is one of the plates. Is it a Impulse or is it an Expulse with a Impulse tank? Not really sure, but he has put a fatter tire in front. Scrambler kind of. Very rugged Max Payne style. Even the exhaust looks so damn cool. I don't think so that's a Impulse engine. That's a bigger engine. Maybe that's a Charisma engine. I remember a lot of Impulse people, they were putting Charisma engine on their Impulse. By the way, his name is the Fanatic Rider. I want to check more of his stuff. Yeah, very scramblish look. Very, very different. Man, there's Impulse tank. I really want to fit the Impulse tank on my Expulse. It's smaller, it's lighter, and I like the look. It gives a proper dirt bike look or dual sport look. It is a Hero Honda engine. This is a Charisma engine. He's an off-road guy. If he has the money, he's gonna pick up a KLX 230. That's like a no-brainer. If I had money, I will pick up a KLX 230. But I don't have money to pick up one more motorcycle. You know, one of those zombie apocalypse movies and all, Max Payne or those games in which you get motorcycle to ride around. Looks like that bike only. This is a Vito. This is a proper Vito. This is America. I am giving this a golden sprocket right here. What a way to end this series for today. Round and round, round and round, the wheels on the bike